In this class, we study sets. What are sets? Sets is the collection of well-defined objects. It is a simple definition provided by many mathematicians and described in many ways. Now, here, what it says, it is a collection. That means, collection is the group of some items. Group of some items और एग्रीगेशन ऑफ सम आइटम. एग्रीगेशन मतलब भी इकट्ठा करना, ग्रुप मतलब भी एक साथ उसको पुटअप करना. ठीक. सो कलेक्शन इज द ग्रुप और एग्रीगेशन और टेकिंग टुगेदर सर्टेन स्पेसिफिक क्लास ऑफ आइटम. एक जैसे आइटम को एक साथ पुटअप करना. ऑल दिस थिंग्स आर नोन टू बी द कलेक्शन. नाउ कलेक्शन ऑफ विच थिंग्स. कैसी चीजों का कलेक्शन? Collection of well-defined objects. Now, what are well-defined? Well-defined objects are those items, those elements, or the members which are definite, which do not have any type of confusion over it. That means that is similar or same thing for one person or other person. It should not be कि इट मे और मे नॉट बी वाला केस वहां पे एट्रीब्यूट हो सके. मीन्स एक पर्सन कुछ और कहे और दूसरा पर्सन कुछ और कहे. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. मीन्स एवरीवन सेज द सेम एंड द डेफिनेट आंसर. सच आइटम्स which is definite all over are known to be well defined. Even though I know this type of explanation may have certain confusion in your mind. For that, we take certain examples to illustrate all these things. For an example, if we say the collection of all states of India, means we all know how many states are there. There is no confusion anywhere all over the universe when we ask this question, the number of states and what are they in India. It is definite answer. It should not be confused. Some say other and some say other. It is not the case in this type of a statement. So, such type of collection which shows the total states in India is a set. Now, when we say the best books in India, best books, best authors in India, best books in India, yeah, for an example, we say best musicians of India. Now, best musicians of India, it may be different from one person or other. For some person, X may be the good musician. For some person, Y may be the good musician. That means there is a different views who is best and who is bad. Let us take another example also. If we say good teachers of your school, then again there may be a confusion. There may be some persons who say that Sangeeta teacher is a good teacher. Others may say, no, Sangeeta teacher is not a good teacher, Madhuri teacher is a good teacher. Someone may say, no, Vikas sir is a good teacher. There may be confusion from person to person. It depends on personal judgment. And whenever anything which depends on personal judgment, that does not qualify the characteristics of well-defined. For characteristics of well-defined to qualify, there should not be a personal judgment. There should be a universal judgment. Remember this thing. So, any collection that is universally accepted, that means any type of group that is universally accepted, that is definite for each and every individual unit, and then it is known to be well-defined. For an example, first 5 prime numbers. First 5 prime numbers, I think all of you know what are the first 5 prime numbers. That means it is definite universally. Everyone will know that 2, 3, 5, 7, 11 are first 5 prime numbers. And likewise we may proceed for any number of prime numbers. So, first of all we know prime numbers. We have a group of that prime numbers and everyone knows that 2, 3, 5, 7, 11 these are the prime numbers. There is no confusion over it and that is why it is well defined. Now, again objects. ऑब्जेक्ट के लिए अभी हमने बताया कि कलेक्शन और ग्रुप जिन चीजों का हम करते हैं, जो आइटम्स हैं हमारे, उन आइटम्स को हम एलिमेंट, मेंबर कह सकते हैं. वही हमारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं जिनके बारे में हम जजमेंट करते हैं कि क्या वो वेल डिफाइंड है या नहीं है. अगर वो वेल डिफाइंड होंगे तो ऐसे ग्रुप और आइटम्स के कलेक्शन को हम
सेट का नाम देते हैं. So this is what known to be set. Now, how to write a set? There are many methods. Basically, two methods are explained over there, which we discussed in later classes. First of all, a simple basic of writing a set is known over here. What it is? A collection of whole numbers less than or equal to 5, letters in the word balloon, and X is a set consisting names of the month in a year starting from letters J. These are the three examples taken to describe you the various characteristics to write down the set. Now, what are the basic characteristics? That the set should be written within the curly bracket. First of all, remember this thing, that it should be written within the curly bracket. Each element means the number of objects जो आप कंसिडर कर रहे हो, जिसका आपने कलेक्शन किया है, all those objects should be separated by the commas. Further, there should be no repetition of any item. If an item is recorded once, it should be only once, whatever be the condition. For an example, let us take the word balloon. In this example, letters in the word balloon, there are B, A, L, O, M. There are 5 letters, in distinct 5 letters, where L is repeated 2 times as well as O is repeated 2 times. 2 times L is repeated, 2 times O is repeated. But we do not need to write repetition. So, for that reason, we write L once as well as O for once. Only one time we write over here. As well as order of elements is immaterial. That means it is B, A, L, O, N. This is not necessary to write in this particular order. You can write in any order, whichever be the letter be first and whichever be the last. So in this example हमने लिखा भी उसी तरह है. आप ध्यान दो तो हमने B को लिखा, L को लिखा, A नहीं लिखा पहले, A को बाद में लिखा. It is immaterial. There is no need कि हम ऑर्डर को ध्यान दें. As well as रिपीटेशन की भी जरूरत नहीं है, इसलिए 2 बार L था, हमने एक ही बार लिखा. कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में ही होना चाहिए. आप कोई और ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते हो. सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से हर एक एलिमेंट को सेपरेट करना है आपको. फर्दर, जब भी किसी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ एक एग्जांपल हमने लिया है, सेट एक्स कंसिस्टिंग नेम्स ऑफ द मंथ इन द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर जे. मीन्स एक्स कौन सा सेट है? एक्स एक ऐसा सेट है जो कि मंथ को कंसिस्ट करता है. उसके एलिमेंट क्या है? मंथ है. कौन से मंथ? ऐसे मंथ जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं. जे लेटर से स्टार्ट होने वाले 3 मंथ हमारे कैलेंडर ईयर में होते हैं, जनवरी, जुलाई एंड जून. अब देखो यहाँ भी हमने ऑर्डर जानबूझ के नहीं लिखा है, ऑर्डर जानबूझ के नहीं बनाया है. हमने इमटेरियल करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए जून के बजाय हमने जुलाई को पहले लिखा और फिर जून को लिखा है. इट इज ऑन यू कि आप किस ऑर्डर में लिखते हो. आपका मन करे जून, जनवरी, जुलाई लिखो, आपका मन करे जुलाई, जून, जनवरी लिखो. ये आपके ऊपर होता है कि आप किस ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट करते हो. So these are the basic characteristics to write a set, that it should be in curly bracket, it should be separated by commas, there should not be any repetition, order of element is immaterial, it's on you in which order you want to write, denoted by capital letters only. That means the set is denoted by capital letter. हमने लिखा था set x consisting name, तो set x स्मॉल लेटर में x नहीं लिख सकते. कभी भी कोई स्मॉल लेटर किसी सेट को डिनोट नहीं कर सकता. ऑलवेज कैपिटल लेटर विल डिनोट अ सेट. नाउ फर्दर, अब हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसको कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगेन हमने एक और एग्जाम्पल बनाया आपको समझाने के लिए. लेट M बी अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 अप टू 20. M एक सेट है जो क्या सेट कर बता रहा है. ये जो सेट है ये 3 के मल्टीपल्स का सेट है. 3 का मल्टीपल्स मतलब 3 का टेबल एक तरह से. तो 3 के मल्टीपल्स का सेट है जो अप टू 20 तक गया. मीन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20, नॉट मोर देन 20 विल बी देयर. सो हमने 3 का टेबल लिखा यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हमने, कैपिटल लेटर में M को लिखा हमने यहाँ पर, और इन सारे एलिमेंट्स को हमने कॉमा से सेपरेट किया. सेपरेट करके ये जो निकल के आया ये हमारा एक सेट बना. अब हमें यहाँ समझाना क्या है कि हम जो ये एलिमेंट्स हैं उसको किस सिंबल से शो कर सकते हैं. लाइकवाइज
3 is an element of set M. This is the statement. 3 जो है इस सेट का एलिमेंट है, किस सेट का? M सेट का। तो हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट, ध्यान देना, 3 और ये सिंबल बनाया हमने और ये M लिखा, तो 3 is an element of set M। इसको और भी एक वे में हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जैसे हमने 15 उठाया, 15 भी इसके अंदर है हमारे सेट में, हमने 15 उठाया और हमने बोला 15 belongs to set M, that means that is 15 और ये सिंबल और ये M, ये डिनोट कर देगा 15 belongs to set M। मीन्स ये सिंबल जो है वो दो चीजें आपको बता रहा है, या तो आप लिखो कि दिस इज belongs to, और या तो आप बताओ इज एन एलिमेंट ऑफ। जैसे कि हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है आपको, सिंबल दिस मीन इज एन एलिमेंट ऑफ एंड सिंबल दिस मीन्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। अगर हम कट कर देंगे तो नॉट एन एलिमेंट ऑफ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिया है, अब इस सेट के अंदर 10 नहीं बिलोंग कर रहा, देखो 10 है ही नहीं इस सेट के अंदर, 10 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, तो 10 यहाँ पे नहीं है। So for that हमने लिखा 10 does not belongs to M, that is 10 does not belongs to M, like this। And similarly आप 17 का भी हम बता रहे हैं, यहाँ पे 17 is not an element of set M, that is हम लिखेंगे 17 और ये वाला सिंबल बनाएंगे और M लिखेंगे। This is what how to describe an element of a set and how to write in a basic manner a set। ये हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया with the simple meaning of set and explaining what it is। Now in the later class we join you again।